I am honored and I am delighted to welcome all of you at the bank of Holy Ganga, which is charged with the Ganga, Yamuna and Saraswati. Three rivers are joining together. They are creating most important place, Sangam Triveni. Because of this, Mahatma Baba visited many times Kumbh Mela, Prayagraj. Lahiri Mahasaya visited many times Paramhamsa Yogananda, and Swami Kriyayoga he visited once. And this is called Mahatma Gandhi Road. According to Paramhamsa Yogananda, Mahatma Gandhi is a great prophet. Great prophet means, who is the great prophet? Maryada Purushottam Ram, Lord Krishna, great prophet. Buddha, Mahavir Swami, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, all are great prophet. Ibrahim, Moses, Jesus Christ, they are great prophet. Muhammad Sahib also, great realized master. All these are great prophet. But latest, present Dwapar Yuga, great prophet is Yogatar Lahiri Mahasaya, who is Yogeshwar of present Dwapar Yuga, who is Purushottam of present Dwapar Yuga, and he transferred his all knowledge to Gyanatari Kriyayoga and to Paramhamsa Yogananda. We are going to understand today how to follow scripture, how to understand scripture. Generally we don't understand it. For example, there is a Bible. I am giving one example from the Bible. There is one chapter. There is one chapter, Luke 6:29-30. What is message of Jesus Christ? You know that you have been taught. You know that you have been taught an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to try to get even with the person who has done something to you. What is teaching of Jesus Christ? If something has done bad for you, but you will not do bad. Never try, never have thought of doing bad to anyone. This is teaching of Jesus Christ. This was teaching of Lord Ram, Yogeshwar Krishna, Lord Buddha, Mahavir Swami, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji. All were having the same teaching. But how to understand this? Because of the greatest love, infinite love of Mahatma Babaji, this knowledge is transferred to Lahiri Mahasaya. That date was 27th November 1861. From Lahiri Mahasaya, this knowledge coming to you. What I am giving to you, it is the same knowledge of Lahiri Mahasaya which was transferred to Kriyayoga, to Paramhamsa Yogananda. Are everybody listening? Yes. Therefore, then what Jesus is telling again? When someone slaps your right cheek, they call the cheek. What is the function of cheek? Conversation, communication. With the help of cheek, we drink water. We practice intake. Intake through nose is also with the help of cheek. If there is no cheek, it will be difficult to intake air, to drink liquid, to eat solid. If there is no cheeks, we do not have conversation. The cheeks means
So that we have conversation. We practice something to take in and out. That should be right. Right cheek means a right conversation. A right things how to eat. A right things how to speak. That is Buddhism. A right speech is Buddhism. A right to consume the food, that is Buddhism. A right hearing is called Buddhism. Same teaching given by Jesus Christ. If it is clear that I am slapping and the right is slapping means touching. Touching means oneness. If I oneness with the right conversation, if practice oneness with right things how to eat, how to converse, then I have to explain same thing to others. This is teaching of Jesus Christ. But we don't understand it. People think that he has said slap means a hit. If someone hitting on your right cheek, try to turn other cheek in front. Other cheek means sometimes when I am in not right position, then I have to do right thing. If you are not in the right position, you have to do right things. This is the teaching. But we can't understand it. This teaching, real teaching came because of the instrumentality of Lahari Mahasaya. Lahari Mahasaya became an instrument. How to spread Kriyayoga. When you practice Kriyayoga, then you will understand Bible. Otherwise, very difficult. Now I am going to speak in Hindi. अच्छी तरह से याद रखिए सारी दिक्कत किस बात की है। जब हम आपसे बोलते हैं आप समझते नहीं हैं, आप बोलते हम समझते नहीं हैं। जब सुनने में बोलने में हम समझते नहीं तो झगड़ा होता है। तो हम करेक्ट ठीक ठीक बोलें और आप ठीक ठीक सुने तो झगड़ा नहीं होगा। ये दोनों गाल हैं, दोनों गाल न हो तो हम पानी नहीं पी पाएंगे, दोनों गाल न हो तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, दोनों गाल न हो तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम श्वास भी नहीं ले पाएंगे ठीक से अगर दोनों गाल न हो। तो दोनों गाल अगर राइट चीक है, राइट चीक का मतलब हम ठीक ठीक बोलते हैं, हम सही बोलते हैं, हम ठीक ठीक खाना पीना खाते हैं, जो अंदर लेते हैं ठीक ठीक हो, सही हो, और जो बाहर निकालते वो भी सही हो, हमारे आप बीच बातचीत सही हो तो झगड़े नहीं होंगे। हमारा खाना पीना ठीक हो तो झगड़ा नहीं होगा। वही जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि स्लैप का मतलब क्या होता है। जैसे स्लैप का मतलब किसी चीज़ को चिपका दीजिए, एक हो जाइए। और राइट चीज़ का मतलब राइट कन्वर्सेशन, आप चिपक जाइए सच से। आप जब बोलिए सच हो, जो काम करिए सच से जुड़ा हुआ हो, सच्चाई से। इसकी शिक्षा दिया है जीसस क्राइस्ट ने। लोग क्या समझते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई जो पिक्चर है तो उसमें क्या दिखाते हैं। गांधी ने कहा था कि कोई अगर दाहिने गाल पर चाटा मारे तो बायां गाल उधर कर दो। तो कोई एक था दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा तो उसने बाएं गाल कर दिया, फिर मारा थप्पड़। कहते अब क्या कहे पता नहीं, तो मारपीट हो गई। बाइबल नहीं समझ पाएंगे। ऑटोबायोग्राफी समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसको पढ़िए तब भी मज़ा आता है। समझ में आए या ना आए लेकिन अच्छा बहुत लगता है। जैसे प्रकाश क्या है समझ में नहीं आता, अच्छा बहुत लगता है। पृथ्वी क्या है समझ में नहीं आता लेकिन खड़े रहते बहुत अच्छा लगता है। दुनिया क्या है समझ में नहीं आता लेकिन बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन अच्छा लगेगा। आज हम आपके कैसे पढ़ी हम बताएंगे। दिस ऑटोबायोग्राफी when try to read it you will like very much but you will not understand. You see the light is very good but you don't understand what is light. Earth is very good, I am sitting on this earth, very good, but I don't know what is the earth. Sky is very good but I do not know what is sky. Air is very good, I do not know what is the air. In the same way, when we read Autobiography of Yogi, we don't understand it. Today I am going to give you a few lines how to understand this Autobiography of Yogi. This is what I have decided today. If you try to understand this Autobiography of Yogi,
you will understand everything correctly. You will understand holy science also correctly. I am opening the chapter when Paramahansa Yogananda was in the hermitage, years in my master's hermitage. When Paramahansa Yogananda was with his Guru, what is this sentence? You have come. Sri Krishna greeted me from a tiger skin on the floor of a balconized sitting room. His voice was cold, his manner unemotional. What does it mean? Try to understand. Sri Krishna greeted me from a tiger skin. Why he was sitting on tiger skin? Why not plain on the blanket? Blanket is also bad conductor of electricity. A wood is also bad conductor of electricity, but he was sitting in the tiger skin. What does it mean? Try to see the nature of tiger. Tiger uses teeth to kill the animals. Tiger uses his claw, his body structure to kill the animals. The whole tiger represents violence. Each structure is perfect balance of non-violence and violence both. In the tiger, skin represents non-violence, while the teeth and the behavior of tiger represents violence, is killing the animals, but where the skin represents just opposite. In our whole head to toes represents non-violence, ahimsa, but our wisdom and mind represents violence. We have created atomic bomb, we have created missile, we have created revolver, we have created rifle. What for? Killing. Therefore, we used our mind, our reasoning and wisdom to create violence within ourselves. What is the platform of violence? Wisdom and mind. Wisdom, mind with the help of sense organ of action, they create violence. Why we have army? Why have so many weapons? What's the reason of that? But our eyes do not like killing of the animals. Those slaughterhouses are made away from the city. Our ears, they do not like to hear the voice of cry. If animals are cry, we don't like it. Our teeth, it doesn't allow to tear the flesh. Therefore, our food is fruits and grains. But our wisdom and mind is complete platform of violence. Therefore, we have army, we have police, we have jail, we torture each other. Therefore, in our system, you will find the violence, non-violence is perfect. What is non-violence? Whole structure. What is the violence? Wisdom field and mind field. Both with the help of senses, they create violence. We practice likes and dislikes. That is the violence. Therefore, we need Kriyayoga meditation so that we practice only to like and like. Dislike should disappear. Complaint should disappear. We should have no complaint, no disliking. Then we will realize our wisdom and mind will be charged with the principle of non-violence, ahimsa. That is what we want. When we practice Kriyayoga meditation, we will realize complete wisdom and mind will be charged with the principle of ahimsa, non-violence. Therefore, what we need? Kriyayoga meditation. When you practice Kriyayoga meditation, the wisdom and mind fully charged with the ahimsa. That is 100% true. Very well demonstrated by Mahatma Gandhi. His wisdom and mind was fully charged with the principal philosophy of Kriyayoga. Therefore, Paramahansa Yogananda said in his last departure, when he was taking samadhi, what he has said very clearly. I am repeating it again. I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method for peace. Practical method for peace. You will follow, you will get peace. I will follow, I will get peace. Anyone will follow, they will get peace. You get peace when you feel joy. You get peace when you feel power. When you have power, knowledge,
When you realize you are immortal, when you realize you are one with God, then you will have peace. Otherwise not. Then what is the message of Paramahansa Yogananda? I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method for peace. If I am weak, I cannot feel peace. I can feel peace only when I feel complete power. Whatever I want, I can do it. If I feel complete knowledge, there is no lack of knowledge, then I will have peace. I must feel ever new joy each moment, then I will have peace. I must feel I am one with God, then I will have peace. It means when you follow the path of Mahatma Gandhi, you will realize you are one with God, you are one with the peace, you are one with the joy, you are one with the power, you are one with the knowledge. This is the message of Paramahansa Yogananda, and greatest master. Paramahansa Yogananda is incarnation of Bhagwan Ram, Lord Krishna, Buddha, Mahavir Swami, Jesus Christ, Kabir Sahab, Guru Nanak Dev Ji. He is incarnation of the all prophets of all ages and land. I prove it. What greatest love Paramahansa Yogananda demonstrated? He was having power to disappear immediately, but he demonstrated, no, I will not disappear. I am going to leave my body. I will demonstrate with the love of God, body is purified. He left body and body remains undecayed. Weeks together it remains as such. He demonstrated great love. He was having power to reappear, disappear, but he did not follow that. He would have disappeared. People will not believe that Yogananda was there. Therefore he demonstrated the willing departure. See the last photo. This is the photo of Paramahansa Yogananda. Remain as such with a smile on face, no change in the body. It was demonstrated by Mahatma Babaji, by omnipresent God, that people should know how much Paramahansa Yogananda loves everybody. Therefore, what he has said, remember that Mahatma Gandhi, when you follow Mahatma Gandhi, what he has demonstrated, what he has taught, practical method for peace to all people of the world. You know that I am repeating again. If you have peace, it means you have power. When you have weakness, you cannot have peace. If you have peace, it means you know how to create your body. If you do not know how to create your body, you will not have peace. You will have peace when you know how to keep your body till you decide. If you are going to face death, we will not have peace. You will have peace when you realize we are one with God. If you are not one with God, you cannot have peace. It means when you follow Mahatma Gandhi, you will realize you are having oneness with omnipresent God. Let me speak in Hindi. अच्छी तरह से हम बताना चाहते हैं कि परमहंस योगानंद हम 100% सिद्ध कर देंगे जो हम बता रहे हैं। ये अवतार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, योगेश्वर कृष्ण के, जीसस क्राइस्ट के, बुद्धा के, महावीर स्वामी के, कबीर साहब के, गुरु नानक देव जी के, जितने अवतार हैं सब परमहंस योगानंद में समाहित है। परमहंस योगानंद का प्रेम देखिए, कितना बड़ा प्रेम। इनके पास ज्ञान था कैसे अदृश्य हो जाए और प्रकट हो जाए। अगर अपने अंतिम समय में महासमाधि पहले अदृश्य हो जाते या प्रकाश बदल जाते, लोग मानते नहीं। अरे ऐसे लोग कह रहे हैं, झूठी बात है। इसलिए परमहंस योगानंद ने ये डिसाइड किया कि अब हम ऐसे शरीर को छोड़ के चले जाएंगे और ये प्रभु का प्रेम दिखेगा कि शरीर में किसी प्रकार का हिंसा नहीं हुई, कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक नहीं हुआ। देखिए ये परमहंस योगानंद के ये स्वरूप महासमाधि के कई सप्ताह के बाद ऐसे ही बना रहा। कोई सड़न नहीं, दुर्गंध नहीं, शुष्कता नहीं आई।
इन्होंने इसलिए दिखाया कि क्रिया के प्रभाव से अगर शरीर छोड़ के प्राण शक्ति निकल गई तब भी इसमें बैक्टीरिया वायरस का अटैक नहीं हुआ। तो आपके पास क्रियायोग साधन है जिसका अभ्यास करेंगे तो वायरस बैक्टीरिया से जो डर है खत्म हो जाएगी। वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कि कैंसर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, इससे डर समाप्त हो जाएगी। इसे जो परमहंस योगानंद ने कहा कि अब महात्मा गांधी के मार्ग को सभी लोग चुने कि उन्होंने प्रैक्टिकल मेथड बताया है शांति पाने का। हमको शांति कब मिलेगी? जब पता चले हमें अनंत शक्ति है। हमें शांति कब मिलेगी? जब निरंतर नित्य नया आनंद मिले। हमें शांति कब मिलेगी? जब शरीर को हम बना लें, इसकी हड्डी को बना ले, इसके चमड़े को बना ले, आंख बना ले, कान बना ले, इसका जब निर्माण करने की ज्ञान आएगा तभी हमें शांति मिलेगी। हमें शांति कब मिलेगी? जब निरंतर आनंद में रहे, हर वक्त हमारा आनंद खत्म ना हो। हमें शांति कब मिलेगी? जब पता चले कि हम परब्रह्म के साथ एक है। और परमहंस योगानंद क्या कहते हैं? आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी who demonstrated practical method of peace that should be followed by all nations। महात्मा गांधी ने शांति का मार्ग दिखाया है। शांति का मार्ग तभी हो सकता है, हम शांति तभी अनुभव करेंगे जब पता चले आई एंड गॉड आर वन। हम परब्रह्म के साथ एक हैं। हम संक्षेप में आपको जताना क्या चाहते हैं? आज से आप किसी की निंदा न करिए। महातार बाबा ने कहा है परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड के सभी रचनाएं परब्रह्म उसी रूप में प्रकट हो रही हैं। इसे हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक है ये ऑटोबायोग्राफी, ये क्या समझना आसान है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। योगी कथा में पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या समझ में आता है? अभी आपको बताते हैं। प्रकाश बड़ा अच्छा लगता है, प्रकाश क्या है पता है नहीं। पृथ्वी बड़ी अच्छी लगती है, बैठा हूँ, लेकिन पृथ्वी क्या है पता है नहीं। आसमान बड़ा अच्छा लगता है, आसमान क्या है पता नहीं। हवा बहुत अच्छी लगती है, हवा क्या है पता नहीं। ऐसे किताब बहुत अच्छी लगती है, इसमें क्या लिखा है पता नहीं। हम आपके एक चैप्टर खोलते हैं। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, जब परमहंस योगानंद गुरुदेव के आश्रम में गए, उस समय की बातें लिख रहे हैं। आप बताइए इसका क्या अर्थ है? हम पढ़ रहे हैं। तुम आ गए। श्री कृष्ण जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म पर बैठे बैठे मुझसे कहा। क्या कहा? तुम आ गए। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य था। इसका क्या अर्थ बताइए? अब सुनिए। श्री कृष्ण जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म पर, वो व्याघ्र चर्म पर क्यों बैठे? ऐसा क्यों बैठे? भाई लकड़ी पर बैठ जाते, कंबल पर बैठ जाते, लेकिन बाघ जानते हैं, टाइगर स्किन पर बैठे, ऐसा क्यों किए? ऐसा हम आपको बता रहे हैं। जैसे टाइगर पूरा देखिए डर लगती है, पकड़ के खा जाएगा। टाइगर के दांत मांस को चीरते हैं, टाइगर के हाथ शिकार को पकड़ते हैं, टाइगर की शरीर शिकार को पकड़ के दबोच देती है। पूरा टाइगर, क्या पता चलता कि ये हिंसा का जानवर है। इस टाइगर में हिंसा और अहिंसा दोनों बराबर है। टाइगर का पूरा अस्तित्व हिंसा का दिखता है, लेकिन टाइगर का जो चमड़ा है वो अहिंसा का प्रतीक है। टाइगर के चमड़े पर बैठिए तो आपको अपने आप अहिंसा का विचार आएगा। टाइगर के चमड़े पर बैठिए तो गुरुत्वाकर्षण बल हमको डिमैग्नेटाइज नहीं करेगा। टाइगर के चमड़े पर बैठिए तो किसी के ऐसे विचार नहीं जो हमको प्रभावित करेंगे। ऐसे अपने अंदर देखिए, हमारा पूरा ये अस्तित्व लगता अहिंसा का है, क्योंकि हम दांतों से मांस नहीं चीरते हैं, फल और अनाज खाते हैं। आंखें हमारी, जानवर कोई मारता हो तो अच्छा नहीं लगता, स्लाटर हाउस सिटी से दूर बनाया जाता है। कान रोने की आवाज़ पसंद नहीं करता है। हमारा हाथ, किसी को मारने के लिए हाथ कांप जाता है। हमारा पूरा अस्तित्व ये है अहिंसा तत्व का। लेकिन हमारा बुद्धि और मन हिंसा है। बुद्धि और मन के प्रयोग से हमने क्या बनाया है? एटॉमिक बम बनाया है, राइफल बनाया है, मिसाइल बनाया है, रिवॉल्वर बनाया है।
ये सब क्या है? बुद्धि और मन हमारे हिंसा के प्रतीक है। जब तक बुद्धि और मन को हम महातार बाबा की शिक्षा से जोड़ नहीं देंगे, अपने अंदर वो बुद्धि और मन हिंसा लाती है, झगड़ा लगवाती है। आपकी बातों को हम समझ नहीं पाते, झगड़ा करते हैं। कौन गलत समझाता है? बुद्धि और मन। तो अपने अंदर जो बुद्धि और मन है ये हिंसा का क्षेत्र है। ये इसे क्रिया योग ध्यान करके हम बुद्धि और मन के ईश्वरी प्रेम से जोड़ देते हैं। जब बुद्धि और मन ईश्वरी प्रेम से जुड़ जाए तब पूरा अस्तित्व हमारा पूर्ण अहिंसा का होता। नहीं, हम झगड़ा करते हैं। कितना झगड़ा स्कूल कॉलेज में है, स्पोर्ट्स है, गेम है, 100 मीटर की दौड़ है, कौन फर्स्ट आता है, कंपटीशन है। हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस बार हम फर्स्ट आना चाहते हैं। जो हमारे बगल में फिसल जाता था हम लड्डू चढ़ाते हैं हनुमान जी को। ये क्या है? ये कौन सा खेल है? हम फर्स्ट आए, आपको फर्स्ट आ जाए तो हमें चिंता हो जाए, हमें गोल्ड मेडल मिले, आपको मिले तो हम रोने लगे। ये हिंसा नहीं है क्या? पढ़ाई में सिर से पैर कौनी तक इसको लेके हम प्रकट हुए हैं तो इसको पढ़ नहीं सकते। कौन नियम बनाया है हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं? इतनी मशीनें हैं, आँख है, कान है, एक एक मशीन को लेके चल रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? इस मशीन से वो मशीन पढ़ना बहुत आसान है। किसने नियम बताया है हम फिट नहीं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए? कौन नियम बताया है? मन और बुद्धि के प्रयोग से ये हिंसा का नियम बनाया गया। इसीलिए हमारा प्रयास क्या है कि क्रिया योग घर घर में चले। ये जब क्रिया घर घर में बैठेगा, ये हर जगह जाएगा तो बुद्धि और मन जुड़ जाएगा प्रभु के प्रेम से, तो हिंसा खत्म हो जाएगी। वरना बुद्धि और मन इतना बड़ा हिंसक है, एटम बम बनाता है, मिसाइल बनाता है, इन लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप कोई चिंता न करिए, आज से किसी की निंदा न करिए, क्योंकि महातार बाबा ने कहा है परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ बिल्ली थी, पेड़ पर चढ़ी, एक स्क्वायरल गिलहरी पकड़ करके खा गई। तब से कहती है अमिता माता, अरे गुरुजी हमको क्या हुआ? कहीं बिल्ली खा गई स्क्वायरल को। तब यार खा लेने दीजिए, उसके खाने के लिए उसका पेट भरेगा कि नहीं? आप ये मत सोचिए क्या गलत क्या सही। अब टाइगर है, पकड़ा, हिरन को खा गया, बड़ा गड़बड़ किया, हमें क्यों सोचे गड़बड़ सही किया? हम केवल अपने को सोचे, हमारे बुद्धि और मन से किसी की निंदा ना हो, किसी को हम गलत ना कहें, किसी को छोटा ना करें, किसी को अपमानित ना करें। जो महातार बाबा की शिक्षा है पूरी साइंस में कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस पे चल के तो देखिए। आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके घर में आपकी पत्नी है, पति हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सबको परब्रह्म मान करके उनकी सेवा करके देखिए। आपकी निंदा करें, कोई बात नहीं, निंदा करते हैं तो हमारी परीक्षा हो रही है, परब्रह्म निंदा किए तब भी उनकी सेवा करते हैं कि नहीं? इसको करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर गायब, डायबिटीज गायब, गठिया ठीक, आँख की कमजोरी ठीक, कान की कमजोरी ठीक, हृदय ठीक, फेफड़ा ठीक, पूरी शरीर ठीक। करके देखिए। Try to practice from today. Accept teaching of Mahatar Babaji. Parabram is all in all. If in family member, if you have children, if children having nonsense talk with you, your parents, children not have honor, respect to you, it is all right. This is my test. My children are Parabram. If they do not like me, all right, but I will like them. If parents are having complaint with the children, do not have complaint. Your husband and wife both should accept each other presence of God. Your brother and sister, mother and father in your family, try to accept all presence of God. If they have nonsense talk, this is the test. They do not talk correctly, but you have to talk correctly. You have to test that you are giving the first division in your examination, that you have accepted all our presence of Parabrahma. Then in whatever behavior they will have, but we will not misbehave with anyone. Try to follow this, you will realize you have everything what you need. What you need something to realize that you can create your body. You can keep your body till you decide. You can feel body presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. You will realize this body is one with God. If you want to feel like this,
From today onwards, I can decide, complain with no one, criticism no one. You have to serve all whatever you can. Serve all and practice Kriyayoga sincerely every day. Therefore, I have decided now I am going to give many Zoom sessions. For example, Switzerland time is different, Toronto time is different, Calgary time is different, Morocco time is different, and they are different. Brazil time is different. Therefore, I am selecting different time zone. I have decided to connect myself with the Zoom with all sessions. And who are coming to the Kriyayoga Ashram, I will have personal meeting with them twice. They can meet me, but they should join this Zoom session. हम बहुत ही खुश हैं कि आप इस पावन गंगा के तट पर, जो त्रिवेणी संगम का तट है, जो महात्मा गांधी का मार्ग है, जहाँ महातार बाबा 31 गिरी जिस जगह पर आए हैं, जहाँ 31 गिरी को स्वामी की उपाधि मिली, जहाँ 31 गिरी की ये मिला होली साइंस लिखे, जहाँ 31 गिरी कहा गया कि परमहंस योगानंद को शिक्षा देनी है विदेश में कैसे हम्बलनेस को व्यक्त करें। परमहंस योगानंद को ज्ञान पूरा था, इन हम्बलनेस कैसे प्रेजेंट करे, इसी को सीखा 10 साल में। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, आपका अवतरण हुआ है इस प्रयाग की धरती पर। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट यू रिसरेक्टेड on this land, Prayagraj, at the bank of Holy Ganga, Mahatma Gandhi Marg. This place is fully charged with the presence of Mahatma Baba 31 Giri. This is the place where 31 Giri is honored by title Swami. This is the place 31 Giri has got a message to write holy science. This is a place where Babaji said he is going to send someone, Paramahansa Yogananda, to practice the lesson of humbleness. Kriyayoga he was knowing before. The perfect knowledge of Kriyayoga before meeting 31 Giri. But he was not knowing what is humbleness, how to behave in humbleness. 10 years he learned how to demonstrate a humbleness. Otherwise in America, you cannot give teaching without humbleness. This brief message for today, I hope. Please remain satisfied. I will try to have many classes every day. Try to pray for this movement. This earth should have no fight, no war. All knowledge should be used to help plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, mountain, ocean, lake. We should use all our talent, knowledge for that. आइए हम लोग संकल्प ले, क्रिया ध्यान करके इस तरह से रहेंगे, पृथ्वी शांति, ज्ञान शक्ति से, अहिंसा के बयार से हरी भरी हो जाए. Let us bow to each other with all devotion. Now you know that Mahatma Baba said there are dandiyut how, right? You will allow me? Please. देखिए जो कार्यक्रम है इसको जितना अधिकतम सब्सक्राइब होगा उतना लोग इससे जुड़ेंगे. जूम सेशन, लाइव सेशन से जितना लोग जुड़ेंगे उतना तेज परिवर्तन होगा. और परिवर्तन बहुत आवश्यक है क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं अनेक देशों के बीच में. हर जगह छोड़िए, अपने अंदर ही लड़ाई हो रही है, परिवार में हो रही है, समाज में हो रही है. सभी लड़ाई झगड़ों को बंद करने के लिए बहुत आवश्यक है ये कार्यक्रम अधिकतम सब्सक्राइब किए जाए. जूम सेशन एक साथ लोग बैठे, आगे पीछे नहीं. जूम सेशन, लाइव सेशन में प्रयास हो एक साथ बैठे. लाइव सेशन में प्रतिदिन तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, इसे जूम सेशन सैटरडे संडे लिया गया है क्योंकि उसमें एक साथ बैठे. एक साथ बैठने का इफेक्ट अच्छा होता है. ये चीज को फैलाने में मदद मिलेगी. जब तक ये फैलेगा नहीं, कष्ट नहीं जाएंगे. ये जो क्रिया का मिशन चलता है प्रयागराज में, पावन गंगा के तट पर
संगम त्रिवेणी के आभा मंडल में महात्मा गांधी मार्ग पर जहां महातार बाबा आ चुके हैं, इसको अधिकतम लोग सब्सक्राइब करें और जब जूम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड all fight and war are clashes on this planet. It has to be removed. And these sessions, whatever is happening at the bank of Holy Ganga, in the premises of Sangam Trivedi, at both sides of Mahatma Gandhi Marg, this place was blessed by Mahatma Babaji, 11 तारीख 23 agree. If this message, this thing is subscribed more and more, in the Zoom session, Saturday, Sunday, we should join together. When we join together, we have big impact. If you want war should stop, then spread this message. That's all.